Hello everyone, welcome to Consequentialist Academy. So in this class we are going to ethically analyze the recent incident of Telangana in which a woman was raped and murdered by 4 accused. और वो जितने accused हैं उनको तेलंगाना पुलिस ने encounter पे मार डाला. So in this class we are going to do the ethical analysis of that incident, that encounter, and we would call it extrajudicial killing because judiciary was completely bypassed in that killing. And we are going to see whether that action is morally correct or morally wrong. So one thing I would like to clarify here, that we are completely interested in UPSC paper ethics 4, that is purely academics part, and we are least concerned in politics or any kind of reasons, sentiments other than academics. So I will start with the definition of ethics. So ethics is nothing but it's a branch of philosophy which goes for critical examination of any human action or human behavior. That is, an action will be there, and if we want to decide that that action is morally correct or morally incorrect, then we will bring different schools of ethics, and from a particular school of ethics we will analyze that human behavior. So let me start this extrajudicial killing, the analysis of this action from the first school, that is school of justice. So स्कूल ऑफ जस्टिस इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब है कि अगर कोई एक्शन ऐसा है जिसमें जस्टिस मिला है तो वो एक्शन मोरली सही है, और अगर इनजस्टिस हुआ है तो वो एक्शन मोरली गलत है. नाउ व्हेन वी पिक दिस जस्टिस, then there are two parts of justice system. So the first part is retributive justice, यानी कि जैसे को तैसा, tooth for tooth, nail for nail, life for life, blood for blood. तो इस एक्शन में जो 4 एक्यूज्ड को मारा गया, ये टिट फॉर टैट था, टूथ फॉर टूथ लिया गया, एंड सो इट इज मोरली करेक्ट फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ एथिक्स, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेट्रिब्यूटिव जस्टिस. Now see the second dimension of this justice, that is speedy trial. So as per the pronouncement of Supreme Court, speedy trial is a basic fundamental right of a citizen in the country. अगर जस्टिस लेट से मिला तो उस जस्टिस का कोई मतलब नहीं रह जाता. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको मान लीजिए क्लास 8 में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन नहीं मिला और वो केस जीत करके आता है 10 साल के बाद, तो वो वापस से क्लास 8 में एडमिशन उसका नहीं हो सकता है. एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सो एवरी ह्यूमन हैज अ राइट ऑफ स्पीडी जस्टिस, दैट इज जस्टिस ऑन टाइम. सो इन दिस केस जस्टिस वॉज डिलीवर्ड इन अ वेरी राइट टाइम, बहुत ही फास्ट जस्टिस हुआ, इसीलिए मोरली करेक्ट है फ्रॉम इस विच स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ जस्टिस वेरी स्पीडी ट्रायल इज द कोर ऑफ द जस्टिस. नाउ कम टू सेकेंड स्कूल, that is consequential school of ethics. So as per consequential school of ethics, any action is morally correct if consequences are correct, and any action is morally incorrect if consequences are incorrect. So in this episode, 4 accused have been killed, and so as far as consequences are concerned, consequences is good, and therefore this is morally correct from consequential school of ethics. Now come to third part, that is the school of Bentham, which is popularly known as hedonism. So as per Bentham, state should make the policy which brings maximum happiness for maximum number of people. यानी ऐसा कोई भी action which can provide maximum happiness to maximum number of people, then that will be morally correct. So in this action we can see that all majority of Indians are celebrating the encounter, and that's why this is morally correct from the school of Bentham, that is hedonism. Now our next school of thought, next school of ethics is constitution, that is constitutional morality. So let us see whether this action is morally correct or not from the point of view of constitution. So India is under a constitution, and India is under a rule of law, and the basic canon of rule of law is be you ever so high, the law is always above you. That means president, prime minister, chief ministers, they are not the king, but law is the king in India. And as per the constitution, we have divided the system into 3 parts, that is legislature, executive and judiciary. Legislature बिल बनाएगी, executive उसको execute करेगी, और ये judiciary का काम है punishment देना या फिर punishment नहीं देना. यानी कि अगर हम इस केस को देखें तो रेप और मर्डर के लिए इंडियन पेनल कोड में प्रोविजंस है, वो बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने बनाया. अब एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस का काम है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है ये डिसाइड करना कि वो जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है या नहीं है. अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में ऐसा क्यों ज़रूरी है कि जो पनिशमेंट का काम है
किसने कौन गिल्टी है या गिल्टी नहीं, ये काम जुडिशरी के पास में क्यों रहना चाहिए। सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे ध्यान में आ रहा है, रेयान इंटरनेशनल स्कूल का एक एग्जांपल ध्यान आ रहा। रेयान इंटरनेशनल स्कूल कुछ साल पहले की घटना है, जिसमें क्या हुआ कि एक बच्चा जो है उसका मर्डर हुआ था स्कूल के अंदर में, और तुरंत कुछ दिन बाद कुछ समय के बाद हमें मालूम चला कि जो बस का कंडक्टर है स्कूल का, उसने उस बच्चे का मर्डर किया था। पूरे पब्लिक के बीच में गुस्सा था। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर उस बस कंडक्टर को उस मर्डर के तुरंत 2 दिन के बाद इनकाउंटर में मार दिया जाता, तो हमें कुछ समय बाद ये नहीं मालूम चलता कि एक्चुअल में गलती वो कंडक्टर नहीं था, एक्चुअल में गलती उसी स्कूल में क्लास 11th का एक बच्चा था। और ये बात हमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चली, और जो वो कंडक्टर था उसने अपना कॉन्फेशन पूरी तरह से पुलिस प्रेशर के अंदर में किया था। So the thing is that every man should get proper trial, and if they will not get the proper trial, we will not be able to know the actual convict, the actual guilty person, and it might be possible that उस वक्त में जो pure justice system है वो थ्रैश हो सकता है, स्लॉटर हो सकता है। तो यानी कि अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करें, तो ये जो एक्शन है एक्स्ट्रा जुडिशियल killing, this is completely wrong and incorrect from constitutional morality. So now come to the conclusion. So the conclusion is that the extrajudicial killing, that is the encounter in this case, is correct from some schools of ethics like school of justice, school of consequential ethics, school of hedonism, but constitutionally and legally it is wrong if the encounter is fake. But if the encounter is genuine, then it is also legally correct, and it is also correct from the other schools of ethics. So I hope I am very clear. Thank you.